व्यावसायिक संस्था बनी जिसने कला में निवेश किया और देश विदेश से बड़ी संख्या में बहुत ही मूल्यवान पेंटिंग्स, मूर्तियां, कपड़े पर बनी कलाकृतियां एवं फोटोग्राफ्स इत्यादि का संग्रहण किया। इस संग्रह में भारत के महत्वपूर्ण आधुनिक व समकालीन कलाकार दैट इज मॉडर्न एंड कॉन्टेम्पररी पोएट्स, पेंटिंग्स, पेंटर्स की कृतियां भी शामिल हैं। उदाहरणतः बी प्रभा, शंकर पलिस्कर, लक्ष्मण पाई, वासुदेव गायकवाड़े, एमएफ हुसैन, एचएस रजा, जतन दास और अंजलि ईला मेनन इत्यादि, जो भारतीय समाज को जानने व समझने के लिए ज्ञान का स्रोत है। I'll be failing in my duty if I also don't introduce NGMA, which is becoming a repository of this entire collection of artifacts which is coming to us from Air India. राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जो सन 1954 से भारत में आधुनिक व समकालीन कला के क्षेत्र का उच्चतम संस्थान है एवं अपने बहुआयामी कार्यों व सफल प्रयासों के द्वारा देश विदेश में जनमान्य से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। इसको ये दुर्लभ प्रकार की कलाकृतियाँ आज इस विशेष अवसर पे हमारे माननीय गणमान्य अतिथिगण के समक्ष एक्सचेंज होंगी। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में 18,000 से भी अधिक कलाकृतियों का संग्रह है और इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। इन संग्रह को हम देश विदेश के नामचीन कलाकारों की जो कृतियां हैं उसके बदलते स्वरूपों को दर्शकों के बीच में विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियों और कार्यक्रमों के माध्यम से लेकर आते हैं। आज एयर इंडिया का कला संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में शामिल होने जा रहा है, जो कि जन साधारण को कला से जोड़ने एवं राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के संस्थापक उद्देश्यों को हासिल करने में एक अहम भूमिका निभाएगा और हम सब आज इसके साक्षी होने जा रहे हैं। मैं पुनः एक बार अपनी ओर से और संस्कृति मंत्रालय के ओर से आप सभी गणमान्य नागरिकगण और खास करके आज के इस कार्यक्रम के हमारे विशेष अतिथिगण हमारे माननीय दोनों मंत्रीगणों का एक बार पुनः आभार के साथ स्वागत करती हूँ और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सेक्रेटरी सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री राजू बंसल जी, सेक्रेटरी कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री गोविंद मोहन जी, जॉइंट सेक्रेटरी सिविल एविएशन सत्येंद्र कुमार मिश्रा जी, जॉइंट सेक्रेटरी कल्चर मुग्धा सिन्हा जी, डायरेक्टर एनजीएमए टेस्टुनार जमील जी, from different countries, officers of the civil aviation and culture, media friends,
आज एयर इंडिया महाराजा कला संग्रह के ट्रांसफर के लिए जो एमओयू का कार्यक्रम में मैं आप सब लोगों को स्वागत करना चाहता हूं। एयर इंडिया सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा जो अमूल्य कला संग्रहों को जो संग्रह किया है, अभी हम देखते थे बहुत पुराने कलेक्शन 1950 से लेके ये कलेक्शन है। आज संस्कृति मंत्रालय को ट्रांसफर करने का आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का समक्ष में आज एमओयू होने वाला है। वो आप पेंट्स देखने के बाद, जो आर्ट वर्क देखने के बाद, जितने भी जो पेंटिंग्स है, जितने भी आर्ट वर्क्स है, वो सही जगह पर आ जा रहे हैं। क्योंकि 60s में 59 में भी मॉडर्न आर्ट का जितने भी कलेक्शन है, आज हमारा एनजीएमए में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट पर आ रही हैं। क्योंकि एनजीएमए आज मॉडर्न आर्ट को प्रोत्साहन देने के लिए लगातार काम कर रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रेरणा के द्वारा, उनके मार्गदर्शन के द्वारा अपना विरासत संग्रहित भारत का आज़ाद का अमृत महोत्सव संदर्भ में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में कल्चर मिनिस्ट्री हो, भारत सरकार हो, अपने संस्कृति को, अपने विरासत को, अपने अनसंग हीरो जो आज़ाद के लिए संघर्ष किया, देश के लिए जो बलिदान हुआ है, वैसे महान भावों का हिस्ट्री भी आज का पीढ़ी के सामने लाने के लिए भारत सरकार लगातार 1 साल से काम कर रही है। उसके अंतर्गत अलग अलग म्यूजियम का हम स्थापना किया है, अलग अलग जगह अलग अलग कार्यक्रम किया है। आज उसके अंतर्गत एक माइलस्टोन होगा। इस एमओय के लिए मैं मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। Shoulders and broad shoulders, if I may, rests the responsibility of the cultural resurgence of India across the globe. The responsibility given to him by Prime Minister Adarniya Shri Narendra Modi ji. Seated on the dais with me, both our secretaries, Secretary Civil Aviation Rajiv Bansal ji, Secretary Culture Govind Mohan Sahib, our joint secretaries of both departments, Satyaj Mishra ji, Piyush Srivastav ji, Mukta Sinha ji, Vikram Devdutt ji, CEO of एआईएएचएल, seated here with us, Acting Director of NGMA, Tim Sonaro Jamir Tripathi ji, our ambassadors of Austria and Belgium, our CEO of the new avatar of Air India, Campbell Wilson ji, and many of you before us who are passionate about Bharat Mata's sanskar, sanskriti, her 5,000-year-old history, a history that is
powered by her adhyatmic shakti, a history that is powered by her Sanskriti, and a history that will once again enable her to emerge as a world leader, both in economic terms and her Mridu Shakti, her soft power. Ladies and gentlemen, it indeed is a great privilege, if I may say so, and a great honor to be here today on the stage with my colleague and my friend Kishan Reddy ji, who under the leadership of our Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who has insisted on, who has stressed on, not only India's economic emergence on the world stage, but also her cultural re-emergence. Responsibility has been well entrusted to my colleague and my brother Kishan Reddy ji, who over the past many years has very passionately taken up this cause, not only across the length and breadth of India, पर यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि विश्व पटल पर भारत की सांस्कृतिक भूमिका, भारत की पारंपरिक भूमिका की एक नई ज्योति जगाने का कार्य मेरे भाई किशन रेड्डी जी ने किया है। और आज उस विचारधारा के साथ उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए आज एक छोटा सा कदम, एक छोटी सी बूंद उस समुद्र में, a small drop in that large ocean of Bharat Mata's culture is being contributed by the Ministry of Civil Aviation through this exposition of India's modern art, ancient art capability. Air India has always been a figurehead, a representation of both those elements that I have spoken about. India's economic capability. An airline in those days, in the early 1900s, when very few countries, very highly economic developed countries could also think that big. It was India and Air India and JRD Tata who thought of a great idea. And right from its inception to the first mail courier aircraft which he himself piloted from Karachi to Mumbai, to the first international flight between Mumbai and London, to the first longest non-stop flight between New Delhi and New York, an art where I sincerely hope it obviously cannot be displayed in its entirety, but certainly like the MoMA, the V&A in England, you must have a revolving exhibition where even if you show 10% from a seasonal variation, you keep changing that collection. And therefore you bring in people who are passionate about art to keep viewing the changing collection as it's going. And I would like to request my brother Kishan Reddy ji also that this exposition of art should not be confined only to the NGMA in Delhi. It should become a traveling expedition. And it must go to various states in India. Because I certainly found it to be extremely educative for me.
People such as myself who have an interest in art, an interest in culture, but do not get an opportunity to be exposed to it often enough. These are wonderful opportunities to learn about our Indian painters, our Indian sculptors, our Indian weavers, and the capability that they have brought, and how they have taken our Tiranga and planted it not only on the Indian stage, but today, these artists of ours have actually taken our Tiranga and विश्व पटल पर गाड़ के रखा है हमारे सभी संस्कृति को और हमारे आर्ट को, हमारे कला को, इन सभी पेंटर्स के द्वारा. So on this day, it gives me great pleasure in handing over this collection, and I am very confident that under Kishan Reddy ji's able command, the soft feeling of this collection and its capability in terms of not necessarily reaching our minds, but certainly entering our hearts, will become a reality. Thank you very much. अरे भाई हेलो यार, ये तो यार मजी कर रहा है भाई. मिल गया. जल्दी जाना मैं खींच के दूँ. ऐसे चलो. सर थोड़ा सा क्लोज में हो जाओ ना. अरे वो क्या कर टोपी नीचे भाई, नीचे हो जाओ. थैंक यू.